Bismillahirrahmanirrahim. Cyclic coordinates and Legendre transformation. First, we define cyclic coordinates. If Lagrangian L of a system does not contain a given coordinate qi, although it may contain its corresponding velocity qi dot, then the coordinate qi is called cyclic or ignorable coordinate. यानी अगर लैग्रेंजियन इक्वेशन के लिए एल के लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे उसमें अगर कोई कोऑर्डिनेट क्यू आई मिसिंग हो तो उस मिसिंग कोऑर्डिनेट को हम साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहते हैं. The Lagrange's equation of motion is given as the time derivative of partial L by partial Qi dot minus partial L by partial Qi equal to 0. If we suppose that coordinate Qi is cyclic, it means that partial L by partial Qi is equal to 0. If we suppose that Qi is a cyclic coordinate that is absent from the Lagrangian, then Lagrange's equation reduces to time derivative of partial L by partial Qi dot is equal to 0 because partial L by partial Qi is equal to 0. But from definition of generalized momentum, we know that Pi is equal to partial L by partial Qi dot. Definition of generalized momentum. So we can replace this partial L by partial Qi dot with Pi so that we have time derivative of Pi which can be written as Pi dot is equal to 0. When derivative is 0, then Pi must be constant. Let this constant is alpha I. Where alpha is to be evaluated from initial conditions. So whenever a coordinate Qi does not occur explicitly in Lagrangian function, the corresponding momentum Pi is a constant of motion. कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट Qi Lagrangian में से मिसिंग होगा यानी साइक्लिक होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम Pi वो कांस्टेंट होगा या कंजर्व होगा. दिस इज कॉल्ड द जनरल कंजर्वेशन थ्योरम. इसको हम इस तरह से भी स्टेट की जनरलाइज मोमेंटम conjugate to a cyclic coordinate is conserved. या हम ये कह सकते हैं कि if a coordinate Qi is cyclic from Lagrangian, then its corresponding momentum Pi will be constant or conserved. या इसको हम यूं भी कह सकते हैं generalized momentum conjugate to a cyclic coordinate is conserved. As we know that Hamiltonian H is defined as summation I Pi Qi dot minus L. So you can see that the coordinate which is missing from L will also be missing from H because the first term does not contain Qi, Pi Qi dot, momentum and velocity, not coordinate. So if coordinate is missing from L, it will also be missing from H. So a coordinate that is cyclic will also be absent from Hamiltonian. So according to Hamilton's equation, Pi dot is equal to minus partial H by partial Qi. As Qi is cyclic, then partial H by partial Qi must be 0. So that this equation can be written as Pi dot is equal to 0. Or Pi is constant. It means that when
partial h by partial qi is equal to 0, then qi is cyclic or h is constant of motion. Pi is constant with respect to qi. So when partial h by partial qi is equal to 0, it means pi is equal to constant. If qi is cyclic, absent from h, then pi, generalized momentum, is constant with respect to qi. Or if pi is constant with respect to qi, then qi is cyclic, that it will be absent from h. Conversely, if a generalized coordinate qi does not occur in h, then conjugate momentum pi is conserved, as h is a function of pi qit, or can be written as p1 pq1 q1 q1 time. And if qi is absent from h, then partial h by partial qi is equal to 0, or minus partial h by partial qi is equal to 0, because the Hamilton equation is pi dot is equal to minus h by partial qi. So we can write pi dot is equal to 0. It means pi is equal to constant. This shows that generalized momentum pi is conserved. Now Lagrangian is given as L is equal to q1, q2, qn, q1 dot, q2 dot, qn dot time. If nth coordinate qn is absent, then Lagrangian L becomes q1, qn minus 1, q1 dot, q2 dot, qn dot time. As well as Hamilton H can be written as P1, P2, Pn minus 1, Pn, Q1, Q2, Qn minus 1, T, where Pn is equal to Pi equal to alpha, or I is equal to n. Then Pn minus 1 is equal to partial H by partial Qn minus 1. Pn is equal to Pi and Pi is equal to alpha for I is equal to n. So we can write Pn minus 1 dot is equal to minus partial H by partial Qn minus 1 from the Hamilton equation. So equation 2 is the form of Hamiltonian cyclic coordinates. The form of Hamilton's equation in this case is Qn dot is equal to partial H by partial Pn. आप Pn की जगह हम अल्फा लिख सकते हैं, तो partial H by partial alpha. इसकी importance है, it may be noted that Hamiltonian procedure is especially adopted to the treatment of problems involving cyclic coordinates. साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स कम हो जाएंगे, मिसिंग होंगे एच से या लैग्रेंजियन एल से. तो जितने कम कोऑर्डिनेट से हमारा वास्ता पड़ेगा, प्रॉब्लम उतना आसान होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक है लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन. द ट्रांसफॉर्मेशन विच transforms Lagrangian formulation variables q dot t into Hamiltonian formulation variables q p t is called Legendre ट्रांसफॉर्मेशन. यानी इसमें q और t दोनों में सेम है. यहाँ वेरिएबल q डॉट है, यहाँ p है मोमेंटम
वहाँ जनरलाइज वेलोसिटी है, यहाँ जनरलाइज मोमेंटम है। यानी अगर दो फंक्शंस के दरमियान कोई एक वेरिएबल डिफरेंट हो, बाकी वेरिएबल सेम हो, तो उस तरह की उस एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करने के जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। यहाँ पे दो फंक्शन, यानी एक लैग्रेंजियन फंक्शन का ताल्लुक इसके साथ है और हैमिल्टोनियन फंक्शन का ताल्लुक इसके साथ है। तो अगर हम लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में या हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर दोनों में हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल डिफरेंट है। यहाँ क्यू डॉट है, जनरलाइज वेलोसिटी है, और यहाँ मोमेंटम है। तो हम जिस रिलेशन के थ्रू इनको कन्वर्ट करेंगे वो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। या इफ वी कंसिडर function of two variables f x y, then differential of this function is df is equal to partial f by partial x d, पहले x के लिहाज से डेरिवेटिव आ गया, फिर प्लस partial f by partial y dy, where let partial f by partial x is equal to u and partial f by partial y is equal to v, so that equation 1 can be written as df is equal to u dx plus v dy. We wish now to change the basis of description from x, y to other independent variables u, y, so that the differential quantities are expressed in terms of differential du and dy. This type of transformation is called Legendre transformation. We are considering another function g, which is a function of variables u and y. So they are defined by the equation g is equal to f minus ux. ये f और g के दरमियान रिलेशन को शो कर रहा है, जिसमें f जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और g जो है वो यू वाई का फंक्शन। एक वेरिएबल x और u जो है वो डिफरेंट है, y वेरिएबल दोनों में सेम है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जिस f को हम g में चेंज कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। g का डिफरेंशियल ले लें तो dg इज इक्वल टू df माइनस यू डी एक्स माइनस एक्स डी यू। यहाँ से f से d इस प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो df माइनस u को छोड़ के x का डिफरेंशियल यू डी एक्स, और फिर x को छोड़ के u का डिफरेंशियल एक्स डी यू। तो हमारे पास ये बन गया फिर माइनस यू डी एक्स माइनस एक्स डी यू। और df इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, इक्वेशन नंबर 3 किसकी वैल्यू, df की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये df की जगह यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, फिर माइनस यू डी एक्स माइनस एक्स डी यू। ये यू डी एक्स कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस की टर्म्स थी, तो डी जी इज इक्वल टू वी डी वाई माइनस एक्स डी यू। और यहाँ से ये बात हम कह सकते हैं कि जो है डी जी यानी डिफरेंशियल ऑफ जी डिपेंड्स ऑन डिफरेंशियल ऑफ वाई and differential of u, which is actually in the desired form. In equation 5, dg is expressed in terms of dy and du, which means that g is a function of y and u. G is a function of y and u. Then differential of g in equation 6 will be, इसमें भी पहले g का y के लिहाज से डेरिवेटिव यानी पार्शियल g बाई पार्शियल y dy, फिर u के लिहाज से प्लस पार्शियल g बाई पार्शियल u du. तो कंपेयरिंग इक्वेशन 7 and 5, the variable x, and then we can see that here coefficient of dy is v and the coefficient of dy is partial g by partial y. So we can write v is equal to partial g by partial y. Similarly, the coefficient of du is here minus x, and in this equation it is partial g by partial u. So comparing these, we can write x is equal to minus partial g by partial u. Equation 8 is the converse of equation 2.
meaning u is equal to partial f by partial x and v is equal to partial f by partial y. So now we have the transformation xy to uy is called the Legendre transformation. The Legendre transformation is defined is used frequently in thermodynamics. For example, the enthalpy X, which is equal to the total heat content of the system, and it is U internal energy plus external energy, the product of P pressure and volume. U is the internal energy and P is pressure and V is the volume. Internal energy plus the product of pressure and volume. And it is a function of entropy S and the pressure P. X is a function of xp, so that its differential will be पहले x s के लिहाज से डेरिवेटिव फिर p के लिहाज से, तो dx partial x by partial s ds plus partial x by partial p dp. Thus partial x by partial x is equal to t and partial x by partial p is equal to v. So that dx is equal to tds plus v dp. Where T and V are temperature and volume. The enthalpy is fully used in considering isentropic and isobaric processes, but often one has to deal rather with isothermal and isobaric processes. In such cases, one wants a thermodynamic function of T and P alone. The Legendre transformation shows that the desired function may be defined as G is equal to X minus Ts, and its differential dg is equal to dx minus tds minus sdt. ये अभी जो लिजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी कि g is equal to f minus ux, यही था कि g is equal to f minus ux. इस रिलेशन को यूज करते हुए हमने ये जो लिखा है फंक्शन कि g is equal to ये f है, f हमारे पास x ये ले रहे हैं हम माइनस, और ये t यहां से हमने लिया है और साथ s टी एस, क्योंकि x जो है वो s है, ये x की जगह पर है s, और p जो है ये y की जगह पर है. तो हमने जो वेरिएबल चेंज यानी पार्शियल x बाय इसके जो डेरिवेटिव होता है पार्ट x का s के लिहाज से, उसको हम जिसके इक्वल लेते हैं वहाँ हमने पीछे हमने इसको u के इक्वल लिया था, ये पार्शियल f बाय पार्शियल x, u इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल x को हमने u कहा था, और ये इसी से जिसके लिहाज से डेरिवेटिव था उसी के लिहाज से इसको x u को मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, यानी ये f माइनस ये है एक्चुअली u x, क्योंकि x s है और u जो है वो t के इक्वल है, तो g इज इक्वल टू x माइनस टी एक्स बनता है. इसका डिफरेंशियल dg इज इक्वल टू
x से dx और ts के प्रोडक्ट फार्मूला से t ds माइनस s dt और t ds प्लस v dp माइनस t ds माइनस s dt। इन dx हमारे पास ये ऊपर इसकी वैल्यू है कि dx इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की है, dx की जगह पे टी डी एस प्लस वी डी पी। तो ये टी डी एस इस टी डी एस से कैंसिल हो गया माइनस वाली टर्म से, तो डी जी इज इक्वल टू एस टी टी प्लस वी डी पी। और यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ जी डिपेंड्स अपॉन डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर एंड डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर। So we can write G is a function of temperature and pressure। जबकि S हमारे पास X जो हमारे पास है it is the function of entropy and pressure। वो G जो है हमने फंक्शन निकाला है टेम्परेचर और प्रेशर, यानी दोनों में X में और G में प्रेशर सेम है। ये X S के ऊपर डिपेंड कर रहा है और G जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है।